गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, शुभोदय। कैसे हैं बच्चों? अच्छे हो सब? ओके बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर हिंदी क्लास. Yes children, we have to start our first lesson. So all of you bring your test books. Yes, have your test book, page number 4. क्या है यहाँ पर? प्रश्नार्थक वाक्य मतलब इंटरग्रेटिव सेंटेंस. This lesson we have to start children. We have started lessons. Before all we have started our lessons. So today we are going to start our Hindi first lesson. I am your Hindi teacher from Dr. Vision School. My name is Manshad. So all of you bring your test books children. Go fastly bring your test books. Right. I think you are having your test books. So प्रश्नार्थक वाक्य माने क्या है? कब, कौन, कहाँ, क्या, ये सब प्रश्नार्थक है. मतलब क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग. इंटरोगेटिव सेंटेंस. व्हाट, व्हाई वी आर डूइंग, हाउ, व्हेन, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन यू विल कम, व्हाट हैपेंड टू यू. लाइक दिस वी ऑल विल आस्क फॉर एवरीवन. यस चिल्ड्रन, विल आस्क और नॉट? We'll ask na. Like this we should have one chart also. See children, प्रश्नार्थक चार्ट देखो. कौन, कौन माने who. क्या, क्या माने what. कब, कब माने when. कैसे, कैसे माने how. कहाँ, where. क्यों, why. कितना, कितना माने how many. Like this for everything we'll use, we will interrogate. As children we will ask for questions. You will ask to your parents also. आप लोग सब अपने मम्मी पापा को पूछते हैं कब है मम्मी, कब है ये एग्जाम, कब कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या काम करेंगे हम लोग. ऐसे हम लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं. క్వశ్చన్స్ మనం అడుగుతూనే ఉంటాం కదా పిల్లలు. లైక్ దిస్, దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్. कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कितना. और भी है इसमें, पर हम लोग ये सब पूछते रहते हैं ना बच्चों. ज्यादातर हम लोग पूछते रहते हैं नहीं. हाउ आर यू, हाउ आर यू, कैसे हो, पूछते हैं ना. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. Why are you not talking? लोग बोले क्या हुआ, क्यों नहीं बात कर रहे हो. Like this we'll interrogate to everyone. These are the interrogative sentence. Why we are asking questions, we'll use these all questions. Right children? For this example sentence are given. For each one some sentence are given. क्या, first what we are going to start with क्या. Yes children, you should have your test book. Bring your test books and notes also, so that we can start, we can read and write in that. Right children? क्या, the first question is क्या. क्या के ऊपर उदाहरण है. क्या माने क्या है, what. क्या माने क्या है. देखो बच्चों, क्या माने क्या है. हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्या है, ये क्या है, हम लोग पूछते रहते हैं ना. What. With what some examples are given here in page number 4. Open your page number 4. Let us write on this. See children, क्या, यह क्या है. यह क्या है అంటే ఇదేంటి అని అడుగుతాం కదా మనం. यह क्या है మనం ఏదైనా అడగడానికి క్వశ్చన్ కి యూస్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ దిస్. yes children, all of you see the test book so that you can also repeat along with me. These are interrogative sentence. When we are asking question, what is this. See, picture is given here. Picture is given here. What is the picture given here? क्या पिक्चर दिया है. हाँ, यहाँ पे टेबल का पिक्चर दिया गया है. यहाँ पे क्या पिक्चर दिया गया है,
टेबल का पिक्चर दिया गया है। इस टेबल को ये क्या है पूछ रहे हैं हम लोग। यह क्या है? यह क्या है? यह मेज है। हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टेबल का पिक्चर दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यह मेज है। हाँ बच्चों, हम लोग उसका आंसर क्या लिखेंगे? यह मेज है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यह मेज है। हाँ बच्चों, मेरे साथ आप भी बोलो, आपको भी पढ़ना आएगा। राइट चिल्ड्रेन? यहाँ एक मेज है बोल सकते हैं, यहाँ मेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही दिया है वहां पे। दिस इज ए टेबल। वी आर आस्किंग क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? ओके, व्हाट इज दिस? near to us is this. what is this? यहाँ क्या है? यहाँ एक मेज है। यहाँ पे एक मेज बोल के दिया है, एक ही दिख रहा है ना, तो एक मेज भी लिख सकते हैं, यहाँ मेज भी लिख सकते हैं। राइट चिल्ड्रन? उसके बाद देखो, ये क्या है? ये क्या है? राइट चिल्ड्रन? ये क्या है? तो व्हाट वी हैव टू टेल? व्हाट आर these? What are these? What are these? See, we can see the picture. What is there? See what is there in the picture? There are बकरियां, गोट है। ये बकरियां क्या है? चंद्र बिंदु आएगा, बकरियां। ई की मात्रा इस तरफ हो जाएगा, क्यों? अनेक है, क्यों? ये बहुवचन। देखो बच्चों, एक है तो सिंगुलर, बहुत सारे हैं तो प्लूरल हो जाएगा, है ना बच्चों? तो क्या आएगा? एक वचन और बहुवचन। वचन बोलते हैं ना सिंगुलर, और प्लूरल को हम लोग वचन बोलते हैं। तो बकरी होने से एक वचन, बकरियां, एक से दो है बकरियां वहां पे। सो बकरियां को क्या बोलेंगे तब? ई की मात्रा इधर आ जाएगा और या चंद्र बिंदु आएगा। हाँ बच्चों, बकरियां, ये बकरियां हैं, ये बकरियां हैं, हैम को भी बिंदु आएगा। These are goats. These are goats. Yes children? Next one. वह क्या खाता है? वह क्या खाता है? Their picture also given, children. See once. According to picture, he is asking that. According to picture, he is asking that. What is there in the picture? He is asking. So, what is there in the picture? See, वह क्या खाता है? वह क्या खाता है? Question. We have to write question. What is he eating? What is he eating? So picture is given there. What is he eating? What is that he is eating? Right children? वह सेब खाता है। वह क्या खा रहा है? सेब। तो ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। When we are writing question, we will putting question. और हिंदी में भी ऐसे आएगा, प्रश्न, प्रा लिखेंगे हम लोग। हाँ बच्चों, वह सेब खाता है। वह क्या खा रहा है? सेब खाता है। वह क्या खा रहा है? सेब खाता है। He is eating an apple. He is eating an apple. He is eating
an apple. Yes children, you can all read these lines first. वह क्या खाता है? वह सेब खाता है. वह क्या खाता है? वह सेब खाता है. What is he eating? Right children? Completed that one. So next we are going for next line. वे क्या पीते हैं? वे क्या पीते हैं? Yes children, some questions here given. That one I am writing here. वे दूध पीते हैं. वे दूध पीते हैं. So two boys are there. What are they drinking? They are drinking milk. What are they drinking? There is a question. What are they drinking? So what are they drinking? They are drinking milk. So this is the question for क्या. क्या का some examples are given. यहाँ क्या है? What is this? There is a picture given. क्या है वहाँ पे? यह मेज है. What is there? There is a table. So what there? This is a table. This is a table. This is a table. Yes children, like this you will read 3 times. Okay, start reading now first. Right children, you all should read properly what is there on the board. Start reading that all word sentence. क्या examples are given? These are 4 examples according to picture. We are all reading here. What is there in the picture? We are reading. Okay. There are some hard words also. There are some hard words also. What are the hard words? See all of you in your textbook. Yes, maze. Maze माने table. Maze माने table. बकरियां. बकरियां माने क्या है? goat. बकरियां माने goat. सेब. सेब और सिंगुलर और प्लूरल सेब ही है. So सेब, apples. Yes children. Next, खाना. To eat. Apple, सेब, apple हो गया. Next, खाना. खाना देंगे to eat. Okay children. Then पीना. पीना माने to drink. पीना माने to drink. दूसरा देखो बच्चों, पानी. पानी. पानी क्या है? वाटर. पानी का क्या है? वाटर. वह दूध पीते हैं. देर गिवन ना, पानी गिवन हियर. सी पानी माने वाटर. दे में ड्रिंक पानी और दूध. The picture given that boys are drinking water or milk, we can use that one. Okay children. These are the words related to kya. Yes. Again you should read these words
let us all read along with again read. यह क्या है? What is this? यहाँ मेज है. This is a table. ये क्या है? What are these? ये बकरियां हैं. These are goats. Goats. वह क्या खाता है? What is he eating? What is he eating? Yes, children. Next answer C. वह सेब खाता है. He is eating an apple. Next C mark. वे क्या पीते हैं? वे दूध पीते हैं. What are they drinking? They are drinking milk. Yes, children. Now we are going to Q. Q. क्या over? Now Q. Q. Next page, see page number 5. All of you can see page number 5, children. 5 student amma andaru right. क्यों? प्रश्नार्थक वाक्य में हम लोग क्यों, यहाँ पे क्यों दिया है. देखो बच्चों, क्यों అంటే ఏంటి? why. క్यों, why, ఎందుకు, ఏంటి అన్ని అడుగుతాం కదా. that. तुम, ओके चिल्ड्रन, तुम फल क्यों, देयर पिक्चर गिवन, क्यों खाते हो? तुम फल क्यों खाते हो? राइट. व्हाट इज द क्वेश्चन देयर? व्हाई आर you eating fruits? Why are you eating fruits? This is the question for first one. Why we will eat fruits? See, some fruits picture is there. I am showing you. Why we will eat fruits? Yes, we all eat fruits. What are the fruits? Mango, आम, तरबूज, केला, सेब, अनानास, अंगूर. हम सब क्यों खाते हैं ये फ्रूट्स? हम लोग क्यों खाते हैं बच्चों, बोलो. हाँ, हम लोग फल किस लिए खाते हैं? स्वास्थ्य बनाने के लिए खाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए और अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए. Like we should be healthy. Yes, children, when we are healthy, we can all play, we can all read, we can do whatever work is given to us. Yes, children. मैं, then what is the answer? Let us see. Here what is given? मैं स्वस्थ रहने, मैं स्वस्थ रहने के लिए, मैं स्वस्थ रहने के लिए फल खाता हूँ. What is the answer, three children? मैं स्वस्थ रहने के लिए फल खाता हूँ. Why we are eating fruits? మన హెల్దీగా, హ్యాపీగా, ఫిట్గా ఉండడానికి ఫ్రూట్స్ తింటాం. రైట్ చిల్డ్రన్? వై వీఆర్ ఈటింగ్ ఫ్రూట్స్? హ్యాపీగా, హెల్దీగా ఉండడు, ఫిట్. ఇది కోవిడ్ పీరియడ్లో అసలే ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ తినాలి. వీ షుడ్ ఈట్ మోర్ ఫ్రూట్స్ ఫర్ అవర్ ఇమ్యూనిటీ పవర్. అందరికీ బాగా ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉండాలి. సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్రూట్స్ వీ ఆల్ ఈట్? ఆరెంజ్, గ్రేప్స్ ఇవన్నీ తింటున్నాం కదా. సో హియర్ వాట్ ఈస్ దట్ బాయ్ టెల్లింగ్? That boy answered. We can write whatever. If you want to write another answer, you can write. But what is the question? तुम
फल, तुम फल क्यों खाते हो? Then in your own sentence you can also write, children. Not here what is given, you write that one only, I am not telling. You can write your own sentence also. मैं स्वस्थ रहने के लिए फल खाता हूँ. मैं स्वस्थ रहने के लिए फल खाता हूँ. मैं तंदुरुस्त रहने के लिए फल खाता हूँ. We can also tell like that. Okay, children. So next, I am. In English it is given, I am eating fruits to be healthy. నేను ఎందుకు తింటున్నాను? ఫ్రూట్స్ ఎందుకు తింటున్నాను? బాగా హెల్దీగా ఉండడానికి తింటున్నాను. Why we are eating fruits? For being healthy. So once again read, children. मैं स्वस्थ रहने के लिए फल खाता हूँ. Right, children? This is the first question. Once again read, children. मैं स्वस्थ रहने के लिए फल खाता हूँ. Don't think fastly, you should read. Read and write then. Okay, children? तुम फल क्यों खाते हो? बोलो बच्चों. Why are you eating fruits? मैं स्वस्थ से स्वस्थ आधा आधा मिलाया है, आधा आधा मिलाया है. स्वस्थ रहने के लिए फल खाता हूँ. Right, children? Next, I am eating fruits to be healthy. Why are you eating fruits? To be healthy. Okay? Like this, we'll continue for these questions also in next class. Okay, children? Bye. You all practice this textbook, page number 4, words, and write your copybook also neatly. I want this all page sentence neatly in your notes. Neat ga notes lo live a line ichi raayandamma. 5th class children, you are not giving live a line. Most of the children who have given me question paper sending under question paper FA1 question paper, you have sent it to me na. What you have done? You are not giving live a line. Full paper anta dantlo khichdi chesi pettisaru. So what you have to do? You have to do gap ivandi. Some gap must be there, and your writing should be very neat. Like how you are beautiful, like that your handwriting should be beautiful. Okay, children? Bye.